So we know in Young's double-slit experiment, question number 21, we are doing question number 21. It says in Young's double-slit experiment using light of wavelength 400 nanometer. So situation 1, lambda 1 is 400 nm. Interference fringes of width x are obtained. So fringe width is x. The wavelength of light is increased to 600 nanometer. So now second situation, the wavelength of light is increased to 600 nanometer. And the separation between the slits is half. So over here the separation between slits was separation between slits is d, and over here separation between slits is d by 2. It's half. Okay, and then they're saying that if one wants the observed fringes width on the screen to be same in both the cases, so fringe width needs to be same. Fringe width is x. Now they're saying what should be the ratio of the distance between the screen and the plate. Means these are the two interfering sources and this is the screen. We know that this distance is d and this distance is small. So they want us to find out the ratio of d in both the cases if the fringe width needs to remain same. So let separation between slit and screen be d1, and over here separation between slit and screen is equal to d. So you know the formula for fringe width, it is lambda capital D1 by small d, and in here let's write this as lambda 1, and in here the same slit width distance lambda 2 d2 by d by 2, right? So we need to find out the ratio of d1 is to d2. बस दोनों को डिवाइड कर देंगे and we'll get the answer. दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में lambda 1 d1 by lambda 2 d2, और small d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक 2 आ जाएगा. So d1 by d2 will be 2 lambda 2 by lambda 1. That is 2 into 600 by 400 nanometer. So it will be 3. Well, now see, we have learned that the fringe width, say two waves are interfering, and at any point, say if you wish to find out the fringe width of a dark fringe or bright fringe, then the fringe width is given by the formula is lambda capital D by small d. We know this. This is the linear width. But if they ask you to find out the angular width, then how do you find this out? So consider this to be a small width over here. Okay. This much small width is lambda d by d. Now, if we want to find out how much is the angular width, then you just need to find out the angle subtended between two lines which are drawn from here to here. That means this small angle which you can see over here. ठीक है, ये छोटा सा एंगल कितना होगा वो पूछा गया है आप लोगों को. तो ये स्मॉल एंगल के लिए हम लोग ये डिस्टेंस को, वी नो दिस इज d, सो इसको हम लोग नियर अबाउट d ले लेते हैं, व्हिच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द थीटा हम लोगों को पूछा है, और जो आर्क लेंथ है वो ये वाला चीज है, राइट? सो हम लोग थीटा कैसे निकालते हैं? थीटा इज इक्वल टू s बाय r. ये s बाय r जो है व्हिच इज नथिंग बट d. अब ये s क्या है? ये पूरा चीज lambda capital D by small d. So it comes out to be lambda by d. Okay. So angular width of fringes is equal to lambda by small d. Whenever they ask you to find out the angular width,
it is lambda by small d. But remember, this angular width should be measured in radians. Measured in radians and not degrees. Radians में measure करना पड़ेगा, ठीक है? Now, if this is the angular width of the fringe, then question number 28. 28 क्या बोल रहा है? It says that in a double slit experiment using light of wavelength 600 nanometer, so wavelength equal to 600 nanometer, that is 10 to the power minus 9 meter. The angular width of the fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. So theta equal to 0.1 degree, which is equal to 0.1 into pi by 0.1 into क्या? Pi by 180 आता है ना? Right. So this will be theta, all right? And find the spacing between the two slits. So small d निकालने बोले हम लोग को. Spacing between the two slits means small d we need to find out. So theta is equal to lambda by d. That means you can write d equal to lambda by theta. So lambda is 600 into 10 to the power minus 9 divided by theta is 0.1 into pi by 180. We use pi as 3.14, okay? Pi as 3.14 और जो आंसर आएगा वो रेडियंस में आएगा, सॉरी जो आंसर आएगा वो मीटर्स में आएगा. Distance, so distance between them will come in meters. ठीक है? और इसका एक second part of question है. It asks that light of wavelength 500 angstrom propagating in air gets partly reflected from surface of water. How will the wavelengths and frequencies of reflected and refracted light be affected? ये पता है तुम लोगों को? हाँ, मतलब reflected light और refracted light का wavelength और frequency में क्या changes आएंगे? वही पूछा है. frequency changing और wavelength जो water में reflected है उसका refracted है. हाँ, so reflected wave will have same wavelength and frequency, whereas refracted light will have same frequency but the wavelength will be decreased. Will be decreased. Wavelength will be decreased. Question number 30 में बोला है कि two monochromatic waves emanating from coherent sources. The displacement equations are given as cos omega t and y2 is given as a cos omega t plus phi. I know omega t minus kx हम लोग पढ़े थे, but अगर सिर्फ omega t रहता है तब भी हम लोग उसको consider कर सकते हैं. Now they are saying phi is what? Phi is the phase difference between both of them. Now they are saying at any point show that the resultant intensity at any point due to their superposition is given by. Show that resultant intensity, okay, not amplitude, okay, intensity is given by I equal to 4I naught cos square phi by 2. Cos square phi by 2. बोलो. सर वेव में तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए होता है. राइट, वही हम बोल रहे हैं कि ओमेगा टी माइनस kx होता है, लेकिन हम लोग ओमेगा टी मेंशन किया है, तो उसमें हम लोग को ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है. हम लोग को सिर्फ जो जरूरत है वो है कि इन लोगों का एम्पलीट्यूड्स और द एंगल बिटवीन देम, बस समझ में आया. वेयर इट इज गिवन I नॉट इज इक्वल टू a स्क्वायर. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे. हम लोगों को पता है कि द resultant wave amplitude is given by a capital A equal to under root of a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos phi, right? So ये वाला पोर्शन तुमको डिराइव करने का जरूरत नहीं है. You can take the help of this and then go for it. तो यहाँ पर
हम लोग जब क्लास में किए थे तब e इक्वल टू रूट ओवर e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस e1 into cos थीटा लिए थे, वो e के जगह में हम लोग यहाँ पर a ले रहे हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पर a1 into दोनों तो सेम ही है ना, इसका भी a है इसका भी है, so if you put the values it will be a square plus 2a square cos phi, हाँ या ना बताओ, a square plus 2a square cos phi, yes or no? तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2a square कॉमन लेके 1 plus cos phi लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब 1 plus cos phi को what can we write 1 plus cos phi as 2 cos square 2 cos square phi by 2, ठीक है, 2 cos square phi by 2। तो अब देखो we know that the resultant intensity is equal to square of resultant amplitude होना चाहिए, so that will be equal to square of this expression, तो square of this expression करने से क्या आ रहा है 4a square cos square phi by 2, and this a square is nothing but given as I naught, so this will become 4 I naught cos square phi by 2. Is that clear? Now you can use this as a standard formula, इसको एक स्टैंडर्ड फार्मूला के हिसाब से यूज कर सकते हैं, कहां पर, जहां पर तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा कि एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स सेम है, और दो वेव्स के बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फेज डिफरेंस तुमको बोला हुआ है, फाई दिया हुआ रहेगा, सो फाई का वैल्यू डायरेक्टली यहां पर डालने से यहां से तुमको डायरेक्टली वो पॉइंट में इंटेंसिटी कितना है वो मिल जाएगा, यू गेट द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। समझ में आया? So first part हो गया, now they're saying hence obtain the conditions for constructive and destructive interference। अब जल्दी से बताओ for constructive interference क्या होगा, second part of the question, for constructive interference क्या है condition, constructive interference कब बोलते हैं बोलो, पार्ट डिफरेंशियल लैम्डा होता है, for constructive interference क्या लिखते हैं हम लोग, पाथ डिफरेंस, वो तो बहुत एकदम फाइनल कंडीशन में चले गए, हम फाइनल कंडीशन में नहीं जाते हैं, फाइनल कंडीशन निकालना चाहते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पर क्या मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, मतलब इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी इज दैट इंप्लाइज cos square pi by 2 is मतलब अगर मैक्सिमम is 1, কেন প্লাস মানে 5/2 প্লাস 1 हो तो -1 দুটোর জন্যই 1 ही হবে, তাহলে cos square 5/2 যদি 1 হয় তাহলে what is the general solution, 5/2 কি হওয়া উচিত, 0 তে হবে, আর শুধু 0 তেই হচ্ছে তাই তো, মানে 2n পাই, हाँ 2n pi হবে, so phi will be equal to 4n pi, phi will be equal to 4n pi, और minimum intensity কোথায় হবে for destructive interference, for destructive interference minimum intensity is minimum, intensity is minimum implies cos square phi by 2 is না, কারণ এখানে স্কয়ার আছে, স্কয়ার কখনো নেগেটিভ কোয়ান্টিটিতে হতে পারে না, না স্কয়ার ইজ অলওয়েজ the minimum value of a square is 0, তাহলে cos 0 কখন হয় 90 डिग्री, so it will be 0 तो सर 90 होता है, so pi by 2 जो है वो 90 भी हो सकता है या 270 भी हो सकता है ना, माने any odd multiple of pi by 2 मतलब 2n minus 1
pi by 2. So that means phi should be equal to 2n minus 1 pi. Right? अच्छा একটা ছোট্ট ভুল হয়েছে I have small mistake দেখো cos square pi by 2 is 1 when it is any multiple of pi even multiple of pi হতে পারে কোনো ব্যাপার নেই because 0 degree তে it is 1 और 180 degree তে cos is how much बोलो -1 तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +1 ही आ जाएगा ना समझ आ रहा है so pi by 2 will be n pi कलेगा 2n pi का pi by 2 will be n pi তাহলে phi का 2n pi ठीक है তাহলে कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग जो स्टैंडर्ड फार्मूला निकाले हैं दैट इज एप्लीकेबल बट जो सिचुएशन एक स्पेसिफिक सिचुएशन में देके बोलेंगे तो हम लोग उसके हिसाब से निकालेंगे See question number 31 it says that we have two slits S1 and S2 and this is the position of central maxima. O is the position of the central maxima. Now they are saying there is a position P which is at a distance of y from O and this y is 1/3 of the fringe width. So fringe width formula is lambda capital D by so it is given. This y is given. They are asking you to find out what is the intensity at this point, intensity of light at the point P. So that point P is neither a constructive interference point nor a destructive interference point because we know constructive interference points comes in a multiple of lambda d by d and destructive interference comes in a lambda d by 2d, right? So this position is neither constructive nor destructive. So what we are trying to figure out, we are trying to figure out the path difference at this position. Because if we can find out the path difference at this position, we can figure out the phase difference. And if we know the phase difference, we can use the intensity wala formula to find out the intensity at that point. Alright? So S2P, the path difference at P is S2P minus S1P is equal to, we derive it from Young's double slit experiment derivation, came up to be how much? Y capital D by small d, right? ऐसे आया था ये उल्टा बोला y small d by right y small d by capital D आया that's right y small d by capital D आया right that was the path difference now this path difference is how much we need to find out y का वैल्यू दिया हुआ है कितना है तो put कर देते हैं lambda d by 3d into small d by capital D we are putting the value of y as this one ठीक है y का वैल्यू ये पुट कर रहा है कुछ उसको अच्छा তাহলে এখানে পুট করলে কি হবে d আর d ক্যান্সেল হয়ে যাবে ক্যাপিটাল D ক্যান্সেল হয়ে যাবে এটা কত আসবে lambda by 3 আসবে রাইট সো দিস ইজ হোয়াট তাহলে এটা যদি পাথ ডিফারেন্স হয় ফেজ ডিফারেন্স আমরা কি করে বার করব we know that phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. So that is 2 pi by lambda into lambda by 3. That is 2 pi by 3. This is what? 2 pi by 3 क्या है? अब हम लोग इंटेंसिटी कैसे मिलेगा? देखो अभी थोड़ी देर पहले we did an intensity formula that the intensity at any point is given by 4 I naught cos square phi where phi is the path difference sorry phi by 2 phi by 2 is the path difference phase difference phi is the phase difference right so at central maxima अच्छा एक चीज करते हैं छोटा सा चेंज करते हैं इसमें ये जो I is equal to 4 I naught लिखा है ना मैंने इसको I naught हटा देते हैं इसको I रखते हैं और इसको I dash रखते हैं ठीक है why will ask me why sir ये ऐसे क्यों किए the reason is यहाँ पर I naught को एक specific value लेने बोला है they have asked you to take the I naught as the intensity of the central maxima right so since they have asked you to take the I naught as the
intensity of the central maxima. If I keep an I naught over here, it will be confusing. इसलिए मैंने I naught को हटा दिया. So I dash equal to 4I cos square pi by 2. Now let us understand first what this equation represents. I dash is the resultant intensity. I dash क्या है? ये I dash क्या है? रोहित समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सर ये किया क्या तुम इंटरफेरेंस का एक क्लास नहीं किया है? वेव ऑप्टिक्स का मैंने क्लास वेव ऑप्टिक्स का सो सेंट्रल मैक्सिमा में क्या होता है I dash is equal to 4I. I dash is the intensity at the central maxima. I is the intensity of the light ray which are coming out from here. Is that clear? अब इन लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा में I dash is equal to I naught. सेंट्रल मैक्सिमम में I dash का वैल्यू कितना है? मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज कैन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट्स गिवन. क्या दिया हुआ है कि the intensity at the central maxima O at a Young's double slit experiment in a Young's double slit experiment is given by I naught. So can I say that central maximum में phi का वैल्यू कितना होता है? कोई फेज डिफरेंस होता है सेंट्रल मैक्सिमम के लिए? ये जितना फेज में जाता है ये भी उतना ही फेज में जाता है, तो फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता है. हम बताओ सारे 4 का साथ जो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी. हां नहीं हां राइट, दिस ओनली दिस मच इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी. सो दैट विल बी द थिंग cos 0 इज 1 पता है हम लोगों को. तो ये क्या हो जाएगा? 4 का साथ जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो I नॉट है. ना मैक्सिमम इंटेंसिटी ये इसीलिए ये कंफ्यूजन हटाने के लिए ही मैंने ये I naught हटा दिया. हम लोग जब इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें I naught was the intensity of the individual wave दिया हुआ. I naught was the intensity of वो दिया हुआ था लास्ट वाला क्वेश्चन में. लेकिन ये वाला क्वेश्चन में I naught is not the intensity of the individual wave. I naught is the intensity at the central maximum. समझ रहा है? इंटेंसिटी एट द हाँ, तो सेंट्रल मैक्सिमम में I dash का जो वैल्यू होगा वो I naught दिया होगा. तो सेंट्रल मैक्सिमम में phi कितना होता है? सेंट्रल मैक्सिमम में फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव कितना होता है? बिकॉज़ दोनों सेम पाथ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा. तो इसलिए phi क्या हो गया? 0 हो गया. और यहाँ पर 0 डालेंगे तो cos 0 का वैल्यू कितना आता है? 1. तो ये 1 हो गया, तो I naught का वैल्यू है 4I. समझ आया? अब बोल रहे हैं at P मतलब P वाला पोजीशन, P में फेज डिफरेंस कितना है? phi का वैल्यू कितना है? 2/3 हम लोग निकाले हैं. तो I dash कितना है वो निकालना है. तो phi is equal to 2/3. Therefore I dash is equal to 4I cos square 2/3 और नीचे 2 रहेगा. I'm putting the value of phi over here. यहाँ पर phi का वैल्यू पुट करना. तो ये क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा. pi/3 pi/3 का मतलब 60. हाँ, so cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 4I half square, right? तो half square मतलब क्या हो जाएगा? I हो जाएगा. हाँ या ना? लेकिन I naught का वैल्यू क्या है? देखो I naught का वैल्यू क्या है? 4I है. तो I का वैल्यू क्या होगा? I नॉट बाय So that is equal to I naught by 4. So the intensity at point P will be I naught by 4. See, this formula can be used as a standard equation when solving sums. If the interfering waves have got the same intensity, means S1 and S2 have got the same intensity, then you can use this formula. I dash is the resultant intensity at a point where phase difference is 5. by 2. नहीं 5. Phase difference is 5. ठीक है? And I is the intensity of the original wave. Intensity I, this I, okay? Don't make a confusion. I is the
intensity of original wave, that is source. Intensity of source लिखने से भी चलेगा, intensity of source, ठीक है। I is the intensity of the source. Is that clear? अब समझ में आया क्या फॉर्मूला है? I तो constant रहेगा, I कांस्टेंट है। सिर्फ हम लोग बोले हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम में रिजल्टेंट इंटेंसिटी I नॉट है, तो जहां पर फेज डिफरेंस 2π/3 है वहां पर इंटेंसिटी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ I। तो इसीलिए पहले हम लोग I नॉट और I का रिलेशन निकाल दिए कि यहां से I का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके बाद ये I का टर्म्स में आया जब लास्ट में हम लोग I = I0/4 यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड दैट इज द आंसर। क्लियर?